तो वो बहुत सेंसिटिव होता है सर्टिफिकेशन के बारे में, क्योंकि एडल्टरेशन तो हम एक डायरेक्टली कट कर सकते हैं या फिर सर्टिफिकेशन बच्चों को क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है इसके ऊपर भी बहुत माइन्यूटली नज़र रखना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, अच्छे तरह से ये कट है। उसके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है? See, I think as a creator, you need to be absolutely clear and absolutely aware of what all you should be communicating to a child. You know, and you should. I mean, I at least put my cap of a father when I am writing something which I want a use certificate, because certain things which I would not want my child to be seeing, I would never be putting that content in my script. So उसके ऊपर सर्टिफिकेशन के बारे में जब सोचते हैं तो उनके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया होनी चाहिए आपको लगता है, या फिर? I don't think एक अलग criteria. I think there are a lot of eligible and learned people who sit in the certification process, and it's very obvious for you to see कि ये content और ये particular चीज़ बच्चे को expose नहीं करना चाहिए आपको। सर अगेन कमिंग टू द कंटेंट बेस, क्योंकि अब यूट्यूब चैनल्स है बहुत सारे, और वाई फिल्म्स का एक यूट्यूब प्रोग्राम भी था, पप्पू वर्सेस पापा। सो वो भी बच्चों के लिए ही था, लेकिन उसका कंटेंट सेक्स एजुकेशन के ऊपर था। तो वो ऐसे वाले कंटेंट कितने हद तक अपील हो जाएंगे बच्चों का? देखिए, इंटरनेट पे लगाम लगाना बहुत मुश्किल है, ओके। और इंटरनेट जो भी है वो मेरे ख्याल से पेरेंट्स की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि जब आपको बाहर से कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है जो आपको बता सके कि ये देखना चाहिए या ये देखना नहीं चाहिए, तो आपको खुद ही एक गवर्निंग बॉडी बनना पड़ता है अपने घर में। और आपको यू शुड बी वेरी केयरफुल कि व्हाट इज़ योर किड वाचिंग, एंड यू शुड बी वेरी केयरफुल एज टू व्हाट यू वांट देम टू बी वाचिंग। इट्स अप टू यू, इट्स अ सेल्फ रेगुलेशन काइंड ऑफ थिंग। We are at 40th International Film Festival of India, and we are talking about children's film in Indian cinema. And right now with us we have Rajiv sir, the founder and CEO of Green Gold Animation. Sir, we are talking about the children's film. First, I just want to ask you, इम्पैक्ट जो होता है बच्चों के ऊपर चिल्ड्रंस फिल्म का, या फिर एनिमेशन, या फिर टीवीज़ के ऊपर, एक सेंसिटिविटी होती है उस एज में क्या दिखाना है या क्या नहीं दिखाना है। सबसे पहले उसके ऊपर अगर हम सोचते हैं तो क्या हमें सोचना पड़ता है कि क्या दिखाना है बच्चों को? आई थिंक फर्स्ट थिंग इज़ आजकल के बच्चे दे आर हुक्ड ऑन टू एनिमेशन। सो पहली चीज़ है, हमें हमारी मीडियम किड्स को अट्रैक्ट करने के लिए एनिमेशन इज़ द बेस्ट मीडियम। एंड इन टर्म्स ऑफ कंटेंट वी हैव टू ऑलवेज ट्राई एंड टेल स्टोरीज दैट हैव सम मॉरल और सम लेसन फॉर द किड. Sometimes kids don't like to take direct instruction, like, you know, brush your teeth. If you tell the kid, you know, you have to, every day you have to brush your teeth twice, the kid doesn't like to take instruction sometimes. So but if he sees his favorite character, you know, get up and brush in a funny way, and, you know, try to do that twice a day, and, you know, show his teeth, and so kids like to imitate and do role model, and if they see their role model do something like this, they will do it same way. If I think we should we try to in our shows also, and something that we all as kids filmmakers or kids TV show makers we should do is that try and show kids respecting elders, you know, try kids showing value to friendship and respecting their teachers, and you know, standing by their friends when they're in trouble. These kind of things, if we show subtly, but again not like a lesson, you know, must you do this, we try to do them, show it in form of a story. I think kids will love that, and that is something that it's also a responsibility to show that. अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सर, अगर हम एक छोटा पत्थर अगर पानी में मारे तो उसका एक वेव्स छोटा सा और ब्यूटीफुल वेव्स आता है, और बड़ा पत्थर मारे तो आवाज़ भी बड़ा आता है, लेकिन पानी भी बहुत गंदा हो जाता है। तो अगर ज़्यादा डोज हम दे दें, मतलब हम अगर सोचते हैं कि कुछ अच्छा सिखाना है तो एकदम से सिखाने गए तो बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट भी गलत तरीके से पड़ सकता है। इसके ऊपर आप कैसे सोचते हैं कि कितने तक हमें दिखाना है बच्चों को? आई थिंक एक चीज़ है, हमको बच्चों के लिए जो भी बना रहे हैं ध्यान रखना चाहिए कि एक तो है ये एंटरटेनमेंट है, एंड बेसिक सिंपल थिंग्स उन्हें सिखा सकते हैं यूजिंग एंटरटेनमेंट, बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट
teach everything through the medium, because certain things are meant to be learned from parents and grandparents and family and friends. So I think for a kid, as long it has to be simple, and simple instruction or simple things would be always better. We're talking about Chota Bhim. This is a famous character right now in India and all over the world. तो उसके मतलब अगर आप देखो तो कॉस्ट्यूम के ऊपर भी आपने बहुत सारा काम किया हुआ है, तो बच्चों को कित हद तक अपीलिंग रहता है मतलब कॉस्ट्यूम के ऊपर, क्योंकि एनिमेशन इज़ ऑल अबाउट द व्हाट दे सी एंड जो कंटेंट जो है वो भी उसमें आता है, तो कॉस्ट्यूम के ऊपर क्या काम आपने किया? आई थिंक इन टर्म्स ऑफ भीम पे हम लोग जब कॉस्ट्यूम पे था, वी हैव केप्ट अ वेरी सिंपल कॉस्ट्यूम. सो मुझे लगा था जब वे मेकिंग भीम, सो जब हमारे आर्टिस्ट एंड एनिमेटर्स ये लोग भीम के कैरेक्टर बनाए थे, सो डिफरेंट कैरेक्टर्स पीपल हैव ड्रॉन डिफरेंटली. सम पीपल हैव शोन विद जीन्स एंड शॉर्ट्स, some people have shown with waistcoat and अलग अलग डिज़ाइंस बने. बट मुझे लगा कि looking at I wanted to show Indianism to the thing. So first thing is obviously, then I thought in my mind Gandhi came, and when I thought about Gandhi, used to go just wearing a simple dhoti across to different countries, and I mean never wore a shirt or anything. So then I started observing kids in rural India. They're the happiest when they're just having a shorts on them, and they're running free, not wearing shirts. Even at Bombay, in I think near the front of Taj Mahal, that what is that point called? In front of that Hotel Taj Mahal, India Gate. Yeah. So there I've seen a lot of kids just wearing shorts and jumping into the waters and having fun. So I felt, if we portray a character just wearing a dhoti, I think that'll bring Indianism to it. So first thing, and also makes the character unique. So that's how we portray Chota Bheem, just with simple dhoti and putting a tilak and combed hair and stuff, and also having some the locket and other things. So again, next question is like Chota Bhim is all about good over a bad. एक बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत. सभी स्टोरीज़ में एक जो कॉमन है वो ये है. क्या आपको लगता है कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो ये डिस्कस करते हैं या फिर किसी को मदद करने की कोशिश करते हैं आफ्टर वाचिंग दिस? हम लोग किड्स ऑलवेज अंडरस्टैंड वेरी ब्लैक एंड वाइट. कि ब्लैक एंड वाइट का मतलब है कि द गुड एंड ईविल आपने जब बात किया, सो kids really understand this much more clear. So many times, today's many characters are also gray, in the sense they are not completely good, they're completely bad. Kids get confused when you see such a character. For example, if you see Munna Bhai, the character of Munna Bhai is such that initially he appears bad, but later on we come to know there is a grey character. So initially we thought kids will not understand this, but actually kids get it. So I asked a kid, like, what do you think about Munna Bhai? Is he a good character, bad character? Pehle he was a bad guy, but now he has become a good guy. So clear, kids are very smart, they understand everything, but they also know that this is reality and this is not reality. So kid also knows ki obviously cannot go and fight a gangster or something. So kids know, they're smart enough to understand that, but small values, they know that certain things obviously a parent or a teacher has to show, and I don't think we encourage kids to go and fight the evil or anything like that. I think kids are not meant to do that. Sir, your association with Netflix for the Bhim, can we talk about that? Like, what are the plans? Yeah, so we're very happy to sign a deal with Netflix, and this is going to be India's first Netflix original, and so we're working on character based on Bhim, which is actually a baby version of Bhim. So in our original show Chota Bheem, Bhim is 9 years old, but here Mighty Little Bhim is Bhim as a baby, as a toddler. So Bhim is 15-month old, and since a baby obviously cannot speak, he doesn't have dialogues, so we have kept this show non-dialogue. So there are no dialogues at all. There will be sounds, the baby sounds and those kind of thing, but this entirely throughout the show there is so it's going to be quite challenging for our studio to tell a story without using dialogue. So it's going to be completely non-dialogue, and music will be very important. So, and the gags and other things will be very important, and also the relationship between Bhim and his mother is going to be very critical to this show. So far in Chota Bheem series, we don't show Bhim's mother much at all. So here we wanted to bring out the mother's character a lot more.
So it will be like in Dholakpur only or globalization कुछ आपने कोई extension किया है? No, we are sticking to the roots of Dholakpur only. So the show is based in Dholakpur, and Bhim will be a baby character. That's about it. So his friends are actually not born when Bhim is, born. The only person that his friend that is already born will be Kalia. So other characters are not going to be in this show. ओके सर अगेन जैसे मिस्टर बीन है जो एक प्रोग्राम था फेमस प्रोग्राम था एंड देन दे हैड मेड अ एनिमेशन कार्टून सो ऐसा कोई प्लान है सर या फिर ऐसा कुछ इंडिया में भी बन सकता है आपको क्या लगता है? आई थिंक इन टर्म्स ऑफ भीम हम लोग काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं. वी हैव डन भीम छोटा भीम वॉज अ 2D शो. फिर हमने अभी जो माइटी लिटिल भीम बना रहे हैं ये 3D शो रहेगा. सो मीडियम चेंज हुआ है बट स्टोरी टेलिंग एनिमेशन सब सेम रहेगा. फॉर फ्यूचर वी आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ मेकिंग लाइव एक्शन विद छोटा भीम बट वी आर कंटेम्पलेटिंग दैट. Probably 2 years away or 3 years away, we are thinking about that as well. सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था पूछना क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि फिल्म्स आर द इमेज ऑफ द सोसाइटी और आजकल जैसे हम देखते हैं न्यूज़ पे भी या फिर कहीं पे भी देखते हैं तो कुछ गलत तरीके के पिक्चर्स भी सामने आते हैं बच्चों के माध्यम के. इस दृष्टि से मैं देख रहा हूँ क्योंकि अल्कोहल कंजम्पशन ले लो या फिर ड्रग्स कंजम्पशन या फिर और कोई भी गलत काम. क्या आपको लगता है कि अगर सोसाइटी फिल्म्स आर द मिरर ऑफ सोसाइटी ऐसे वाले मतलब ऐसे कंटेंट के ऊपर फिल्म बनाना या फिर दिखाना सोसाइटी में या बच्चों के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है या फिर ऐसे वाले फिल्म नहीं बनाना चाहिए एनीथिंग? I think I'm not the right person to talk on those things. I believe in always making positive films that will be good for the kids and the society. So that is my point. Whether those kind of movies should be made or not, really, I really don't know. My point of view is what I would like to make is make things that are positive and will motivate people to achieve bigger things. I think if you look at Indians 20 years ago to Indians today, today's Indians are a lot more confident. They're a lot more aggressive. They are a lot more. You're seeing a lot more entrepreneurs come and all. So this kind of thing has happened because of the hard work of our elders and parents, and that's showing results today. And that also we had great leaders and good motivation at different levels. So I think always a positive thing will inspire somebody to achieve bigger things. Any new projects, sir? Besides this one, we are launching a new show called Kalari Kids. It's based on Kalari Payattu, Indian martial arts. And this show will be launched next month on Amazon Prime. We are very excited about this show. Thank you, sir. Thank you for talking with us. Thank you very much. Thank you. 40th International Film Festival of India right now here in Goa आणि पयलो दीस जेन्ना जालो तेन्ना CM पार्टी आशिल्ली फॉर दी एक्टर्स एंड VVIP पर्सन्स फॉर IFFI आणि त्या वेळार आमी अशें म्हणटा की फिल्म फेस्टिवल जे आसा ते एक्सचेंज ऑफ कल्चर म्हळ्यार भायल्या देशांतली फिल्मां हांगासर येता जायतीं फिल्मां बरीं बरीं आमकां पळोवपाक मेळटा तांचो कल्चर शिकपाक गावता आनी कल्चर म्हणटा आसतना फूड म्हळ्यार जेवणूय तातूंत येता. आणि CM पार्टी जेन्ना आशिल्ली तेन्ना आमचो गोंयचो येस आमकां ताचेर खूब प्रावड आसा की बऱ्या तरेचें जेवण आमकां सर्व करता तें म्हळ्यार आमोणकर क्लासीक केटरर्स हांच्यांनी डिजर्ट सर्व केल्लो आनी सगळ्या एक्टर्सांक खूब मानवलो आवडलो आणि आयकपाक आयलें की शाहरुख खान नाना पाटेकर हांच्यांनी ताजे डिजर्ट्स ताजे जे पान केल्ले ते पार्सल करून व्हेले घरा कडेन खावपाक किंवा आनीक खंयसरूय वयता तेन्ना खावपाक. सो ह्यो सगळ्यो इंट्रस्टींग गजाली तुमच्या मुखार हांव घेवन येता. आमचे बरोबर आसा आमोणकर क्लासीक केटरर्स हांचे प्रोप्रायटर प्रदोष आमोणकर. प्रदोष बाब, वेलकम टू द शो. प्रदोष, सगळ्यान पयलीं कॉंग्रेच्युलेशन्स कारण येस एक लँडमार्क आशिल्लो आमच्या गोंयांत आमोणकर क्लासीक केटरर्स म्हटल्यार काय कसलें टेन्शन नाशिल्लें बऱ्या तरेचें जेवण आमकां मेळटालें. नेक्स्ट स्टेप जे पयल्या दिसाचे IFFIच्या पार्टेक आमकां पळोवपाक मेळ्ळें इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर गोवा कारण इतले बरे डिजर्ट तुवें थंयसर सर्व केले एंड दे लायक्ड इट. सो कसो आशिल्लो थंयचो माहोल आनी कितें फील जालें तुका थंयचो? इट वॉज एक्चुअली अ ग्रेट एक्सपिरियंस. म्हाका एक बऱ्या पैकी एक्सपिरियंस मेळ्ळो वर्किंग एट द वेरी हाय स्टँडर्ड ऑफ केटरिंग्स. कळ्ळें थंय म्हाजे शिवाय बरे बरे केटरर्स आसलेले आनी ताज वॉज देर, सोय वॉज देर डुईंग द गोवन क्युझन. पूण म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी फॉर पान कावंटर. इट वॉज 66 वेरायटी ऑफ पान आनी गोवन डेजर्ट्स. आनी गोवन डेजर्ट्सान आमी
ट्रेडिशनल गोवन डेजर्ट्स प्लस आमी थोडे फ्युजन केले ऑफ गोवन डेजर्ट्स. कसले कसले आशिल्ले? शिरवळ्यो आसल्यो, मागीर केळ्याचो हलवो, सत्व केल्ले आमी, मागीर देर वॉज कोकमाचे मॅक्रॉन्स केल्ल्यो. ओके, देर वॉज सेरेदुरा ते खाजे आमचे जे जात्रेक बी काल्यांक बी मेळटा पळय ते खाज्याचे सेरेदुरा असले. आनी हे सगळे आयटम आमचे सामके हीट जाले आनी इट वॉज अ व्हेरी गूड एक्सपिरियन्स. आनी मेन आमचो हीट एमंग ऑल द काउंटर 7-8 काउंटर द मेन वॉज द पान काउंटर. तो कोल्हापूरसून येयल्लो, स्पेशल आमी ताका हाडलेलो. देर 66 टायप्स ऑफ पान आनी 2 आमी पानां भितून डिझायन केली, वन फॉर इफी स्पेशल म्हणून आनी एक आमी स्पेशल केलें आमोणकर क्लासीक केटरर्स पान म्हणून. आनी दोनी पानां बरी हीट जाल्ली. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट की ईच एंड एवरी एक्टर जे थंय येयल्ले तेंच्यांनी प्रत्येकानी पानां व्हेली, पार्सल घेवन गेले, खाल्ली ती जाल्यार पार्सलूय घेवन गेले. इट वॉज अ व्हेरी गुड एक्सपिरियन्स. Okay, I have seen some pictures with I think so मृणाल कुलकर्णी, नाना पाटेकर, कैलास खेर की ते आमचे गोंयचे कुझीन, गोंयचो जे डिजर्ट्स आशिल्ले ते आस्वाद घेताना शिरवळ्यो किंवा बाकीच्यो. सो तांकां जेन्ना कळ्ळें दीस इज अ गोवन ट्रेडिशनल म्हणपाक शकता, कारण शिरवळ्यो किंवा केळ्यांचो हालवो तूं जशें म्हळें, हे ग्लोबल किंवा इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावयतना तांकां सुद्दां बरें दिसलें आसतलें की आपूण कितें तरी वेगळे आनी युनीक खाता आसतलो. थंय एक्चुली म्हाका दिसता देर वर अरावंड मोर दॅन 20 डेजर्ट्स. 20-30 डेजर्ट आसतले. भितरले 6-7 डेजर्ट्स आमी केल्ले. द मोस्ट कन्झम जे जाले दॅट वॉज ट्रेडिशनल डेजर्ट्स, हालवो, सत्व आनी शिरवळ्यो. ह्यो ज्यो जाल्यो त्यो सगळ्यान मॅक्झिमम कन्झम्पशन जाल्यो एमंग ऑल द डेजर्ट्स. सेकंड दॅट वॉज अ व्हेरी गुड एक्सपिरियन्स. एनी अदर कमेंट तुमकां एक्टर्सा कडल्यान गावल्या किंवा खूब बरे कमेंट्स मेळ्ळे आसा. सो लायक एक एक्झाम्पल म्हळ्यार मृणाल कुलकर्णी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तिणी आमकां सांगलें की तुमच्यो ज्यो शिरवळ्यो आसा आनी सत्व इट वॉज फॅन्टॅस्टीक, समथींग डिफरंट. कळ्ळें न्ही, म्हणजे नुडलूय आमकां मेळटा स्वीट डीश म्हणून अशी मालदी. नुडल्स एज अ स्वीट डीश इन अ कोकोनट. दॅट वॉज अ व्हेरी गुड एक्सपिरियन्स. सो लोकां खातीर न्यूडल्स आसतले पूण आमच्या गोंयकारां खातीर शिरवळ्यो कितल्यो इम्पॉर्टंट आसा हें सगळ्यांक खबर आसा. एनीवेज प्रदोष, कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड थँक्यू व्हेरी मच फॉर टॉकिंग विथ अस. म्हाका हांवें ऐकलां की तुजे आर्टिकल्स आख्ख्या देशभरान गाजता सद्या. मेन म्हटल्यार शाहरुख खान जेन्ना येयलो तेन्ना ताणें ऑलमोस्ट सगळ्योच व्हरायटी पानां ज्यो आमच्यो पयल्यो रावंड असो भोंवन आनी ताणें डायजेस्टीव पान मागलें आमचे कडेन आसा कारण दॅट वॉज अवेलेबल एक्चुली विथ अस डायजेस्टीव पान. आनी ताणें खाल्लें आनी मागीर तो म्हणलो आपल्याक आनी एक खंय तरी पान खावंक जाय. मागीर ताका आमी ट्रेडिशनल गोविंद विडा म्हणून आसता पळय, गोविंद विडा दॅट एक्चुली ट्रेडिशनल पान फ्रॉम कोल्हापूर, गोविंद विडा. तो ताणें खाल्लो आनी ताका आमी चलसत मी व्हरतले म्हणून शुअर आय लायक म्हणलो आनी आपल्याक म्हणलो दी पार्सल. आनी ताणें पार्सल घेवन गेलो. सेम एज नाना पाटेकरान खाल्लें सिंपल पान पूण ताणें सुद्दां पार्सल व्हेलें. It was a great experience. 40th International Film Festival of India right now here in Goa and yes, इतली वर्सां आमी पळयता फिल्म फेस्टिवल. दर वर्सा नवीन चेंजीस आमकां पळोवपाक मेळटा. फिल्म्स जेन्ना एक्सचेंज जाता लायक भायरच्या कंट्रींतले फिल्म्स आमच्या गोंयांत येता, इंडियेन येता आनी आमकां वेगवेगळे कल्चर पळोवपाक मेळटा, कल्चर शिकपाक मेळटा. सो हे कल्चर शिकता आसतना जायत्यो नव्यो गजाली आमच्या तकलेन वता. आतां फिल्म्सा बद्दल उलयता आसतना आमच्या बरोबर एक एक्टर आसा. ही हॅड एक्ट इन हिंदी अँड मराठी फिल्म इंडस्ट्री. नागेश भोसले साहेब आमच्या बरोबर आहेत. सर नमस्कार आणि वेलकम टू गोवा वन्स अगेन. थँक्यू सो मच. या सर आम्ही इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आहे. फिल्म फेस्टिवल म्हणजेच शाहरुख खानने जसं ओपनिंग सेरेमनीला सांगितलं होतं की वासुदैव कुटुंबकम, एक कुटुंबपूर्ण जग एक कुटुंबासारखं वावरायला पाहिजे. जेव्हा फिल्म्स एक्सचेंज होतात, फिल्म्स येतात बघायला मिळतात, कल्चर पण एक्सचेंज होतो. नक्की इंडियन फिल्म इंडस्ट्री किंवा आम्ही रिजनल फिल्म इंडस्ट्रीला सुद्धा म्हणू शकतो काय फायदा होऊ शकतो फिल्म अशा तऱ्हेच्या म्हणजे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जेव्हा होतं तेव्हा. सी इट्स ऑलवेज बेनिफिशरी वेन आपण जेव्हा जगभरातले सिनेमे इथे बघतो तर आपल्याला एकतर त्यांचं तंत्र कळतं, ते सिनेमे कुठल्या वेगवेगळ्या विषयांवर हाताळलेले गेले आहेत ते कळतं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तिकडचं एक वेगळं कल्चर आपल्या लक्षात येतं. तिकडची माणसं कशी राहतात, तिकडची माणसं कशी बोलतात, ती कशी वागतात, त्यांचे इमोशन्स काय आहेत. पण ऑन दी होल आता मी जवळजवळ 25-30 वर्ष विविध फेस्टिवल्स अटेंड करतो. मला एक गोष्ट लक्षात आली आहे, ह्युमन इमोशन्स जगभरात सगळीकडे सारखे आहेत, त्यात काही वेगळेपणा नाही. कल्चर बदललेलं असतं, जागा बदललेली असते, जॉग्राफिकली ते सगळं वेगळं असतं, पण ह्युमन इमोशन्स आर द सेम. सो आणि मोस्ट ऑफ द इंडियन फिल्म्स और अदर मराठी रिजनल फिल्म्स आर बेस्ड ऑन ह्युमन इमोशन्स.
जे आपल्याकडे उगाच त्याला आर्ट फिल्म आपण म्हणतो, पण आर्ट वगैरे काही नाही, चांगला सिनेमा असतो, वाईट सिनेमा असतो. पण ह्या पद्धतीचा हा जो सिनेमा आपण इकडे करतो भारतामध्ये, तो मोस्टली ह्युमन इमोशन्सवर असतो. आणि त्यामुळे आज काय होतं आहे, गेले काही वर्ष आपला सिनेमा भारताबाहेर अगदी ऑस्करपर्यंत, मराठी तर ऑस्करपर्यंत जाऊन आला आणि भारताबाहेर खूप गाजतो आहे. म्हणजे मी आत्ता लास्ट इयर एक फिल्म केली नातीखेळ नावाची, तर त्या फिल्मला कॅनडाला मला बेस्ट डिरेक्टर मिळालं, सॅन होजे USA बेस्ट सिनेमॅटोग्राफर, बेस्ट ॲक्टर्स मिळालं, पामेलामध्ये त्याचं स्क्रीनिंग झालं. म्हणजे असं तर आपले इमोशन्स त्यांना ॲक्च्युली कळतात आणि काही वेगळं नाही आहे. म्हणजे नाट्यशास्त्रात लिहिलेले नवही रस एकच आहे सगळीकडे एकच आहे. फक्त माणसं बदललेली आहेत, चेहरे बदललेले आहेत. समबडी इज ब्राऊन, समबडी इज व्हाईट, दॅट इज इट. पण ह्युमन इमोशन्स आर सेम. बट बिसाइड्स दॅट आम्हाला कल्चर पाहायला मिळतं, त्यांचं राहणीमान पाहायला मिळतं. आपल्याकडचे सॉन्ग अँड डान्स कसे आहेत, त्यांच्याकडचे कसे आहेत. तर तुम्ही प्रगल्भ होता, तुमचं ज्ञान वाढतं. आणि जेव्हा एखादा मेकर किंवा सर्वसाधारण माणूस जरी त्या चित्रपटाला गेला, काय महत्त्वाचं काय आहे की सिनेमा कल्चर बदलतं, सिनेमा माणसाची सायकी बदलतं. आपल्याकडे अमिताभ बच्चन आले तेव्हा मला वाटतं 90% लोकांचे केस कानावर असायचे. तर सिनेमा इज अ ग्रेट इन्स्ट्रुमेंट टू चेंज सोसायटी. त्यामुळे विविध चित्रपट बघून आपल्यात खरंच काहीतरी बदल घडू शकतो. आणि म्हणून हे चित्रपट महोत्सव जे आहेत हे जास्त महत्त्वाचे आहेत. सर, एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन मी सकाळी पण ह्याच्यावरती बोलत होतो. जेव्हा आम्ही म्हणतो की सिनेमाज ऑर फिल्म्स आर द मिरर ऑफ सोसायटी, म्हणजे सोसायटीमध्ये काय घडतं ते सिनेमाद्वारा आम्हाला बघायला मिळतं. सो इन दॅट कॉन्टेक्स्ट सर, मला एक विचारायचं होतं की समजा आम्ही आता चिल्ड्रन्स मूवी फिल्म्स म्हणतात, चिल्ड्रन्स मूवी, तेव्हा आजकाल आम्हाला न्यूजवरती किंवा बाकीच्या न्यूज चॅनल किंवा पेपर्सवरती म्हणा की मुलांचे काही वाईट चेहरे, वाईट पिक्चर्स पुढे येतात. लाईक दे आर हॅव्हिंग अल्कोहोल, कन्झम्पशन ऑफ अल्कोहोल ऑर कन्झम्पशन ऑफ ड्रग्स एनिथिंग. सो ते सिनेमाद्वारे दाखवणं बरोबर आहे का? इट्स नॉट अबाउट काय बरोबर आहे आणि काय नाही. जसं आता तुम्हीच असं म्हणालात की चित्रपट हा सोसायटीचा चेहरा असतो आणि जे सोसायटीमध्ये घडतं ते चित्रपटात दाखवलं जातं. नाव इट इज अप टू सोसायटी हाऊ टू इन्फ्लुएन्स इट. असे अनेक चित्रपट मला माहिती आहेत की यूथ बिघडतोय पण त्यांनी काय करायला हवं हे पण दाखवलं. तर तुम्ही काय घ्यायचं हे तुमच्यावर आहे ना. तो यूथ बिघडतोय हे तुम्ही पाहिलं, पण त्याच्यामुळे त्याचे दुष्परिणाम काय होतात हे पण तुम्ही पाहिलेत. आणि ते बघूनसुद्धा जर तुमच्यात बदल घडणार नसेल, तुमच्यात सुधारणा होणार नसेल, तर मग तुम्ही चित्रपट नका बघू किंवा त्यातनं काही घेऊ नका. फक्त एंटरटेन म्हणून बघा. इट्स ॲज सिम्पल एज दॅट. आई थिंक अभी बहुत जल्दी है, इट्स टू अर्ली. अगर मेरे डायरेक्टर चाहेंगे तो मैं तैयार हूँ खुद की आवाज़ में अपने तेलुगु डायलॉग्स डब करने के लिए. वो तो ऑलरेडी कोशिश जारी है, वो तो ऑलरेडी कर रही हूँ. तो आई होप अगर उनको लगे कि मैं काबिल हूँ खुद की आवाज़ में डब करने के लिए तो मैं कर लूँगी. Is the gentleman here? Hi Shraddha, Russell from Movie Fight. Lovely meeting you again. Thank you. Okay. So Shraddha, I have two questions. फर्स्टली दो सवाल है क्या बात? एक साथ एक फ्री है. तुम्हारा माइक नहीं मिलेगा ना इसलिए. Okay. So my first question is, after Ashni 2, you were on a roll. You gave 5 hits in a row. Okay, and they were clean, unactive vocal hits. But after that, a few films of yours has underperformed a bit. If you would also agree with that. So after tasting so much initial success very early in your career, how is it coping with the setbacks? I also think that my initial films did like very well, phenomenally well. So anything that didn't match up to that, then it would be viewed as falling short.
but I have to say that the kind of love that I still have received from everybody, despite my movies doing well or not doing well, is priceless. I guess all the people gathered here is a testimony of the fact that how much they love you. I mean, it's the kind of love that I have from everyone over here. I mean, I can't explain it in words what it means to me. So I think ups and downs are a part of life, and I just hope I keep making everyone proud. That's all. All right. And my second question, Please, quickly. So I have read that when the script of Sahu was offered to you, you initially had reservations, but later on you agreed. Joining us in a moment. One more question we can take. Any question from a lady? Any lady who wants to ask anything? Are lady? There's a question here. Are my eyes really brown? I can answer that. I'm the closest standing to you. And yes. See, I think let him see. Come. You want to see? Oh, easy. Easy. Okay, nobody push him, please. Okay, sorry, I guess. But my eyes are like my father's. My father's eyes are hazel brown. So are mine. But I have chashmas. I have glasses. So मेरा power है. तो 3.5, 3.75, 2.5 काफी बड़ा power है. तो मैं transparent prescription lenses पहनती हूँ. नहीं तो I'll have to be in chashma everywhere, which I don't mind. I love my chashmas. Yeah. All right. Any other question from a lady? Lady, yeah, lady is the chance. Yes. All right. Oh yes. Okay, the lady is right here. Just hold the mic close, please. Do you believe in any parallel kind of cinema or 100 club wala cinema? एकदम serious question भी Because I study in a film department. All right. And I fully believe on parallel cinemas kind of. I think all of us should believe in all kinds of cinema. Why should we only believe in one kind? You know, we should believe in all kinds. I believe in all kinds. I believe in our classics. I believe in new age cinema. I believe in, you know, out of the box kind of cinema as well. I really do hope. Sorry? That's why I'm asking, which is very connected to social issues. Can you just repeat that part again? Social issues. She's saying that. You know, I think all kinds of films. I mean, you can't. I don't know if you can generalize and be like only parallel cinemas address social issues. I don't think that's true, because I think that a film like Toilet has addressed a social issue very well. So it's actually an amalgamation. I love that film, you know. It's such a lovely movie, and it's addressed social issues so beautifully and in a very entertaining way as well. All right, just a couple of questions. Last two questions, yeah. Is that a question? All right, this little girl has a question here. I love you too, and I love all of you guys.